गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का हमारा पहला टॉपिक है अर्थक्वेक इन मोरक्को। ये टॉपिक आपके ज्योग्राफी के लिए या एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक पावरफुल अर्थक्वेक जो है वो मोरक्को को जो है वो स्ट्रक किया है हिस्टोरिक सिटी ऑफ मराकेश में। वहाँ पर लगभग 2000 से ज़्यादा लोग जो है वो मर चुके हैं। ठीक है, तो अर्थक्वेक क्या होता है ये हम फिनोमेना देखेंगे। तो अर्थक्वेक एक इंटेंस शेकिंग ऑफ द ग्राउंड होता है जो कि अर्थ के सरफेस पर जब जो डैमेज होता है उसको हम अर्थक्वेक कहते हैं। एक्चुअली ये होता कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस के बिलो एक ऐसी लोकेशन होती है जिसको हम हाइपोसेंटर कहते हैं। वहाँ से ये शेकिंग स्टार्ट होती है और अर्थ पर जब ये सरफेस पर आकर जहाँ पर ये लोकेशन बनती है हाइपोसेंटर की, उसको हम एपीसेंटर कहते हैं। तो ये होता कैसे है, जब दो ब्लॉक्स टेक्टोनिक प्लेट्स के सडनली एक दूसरे को स्लिप पास करते हैं तब जो है ये अर्थक्वेक होता है। और ये प्लेट्स थ्रू आउट द अर्थ स्प्रेड हुई है और ये शेकिंग ऑफ द ग्राउंड करती हैं। ठीक है, अब अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल जो है वो यूज़ किया जाता है, रिक्टर स्केल यूज़ किया जाता है, इंटेंसिटी स्केल यूज़ किया जाता है। लेकिन अर्थक्वेक अभी भी एक ऐसी कॉमन नेचुरल हैज़र्ड है जिसको अभी भी हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। कोई अर्ली वार्निंग सिस्टम इसके लिए डेवलप नहीं किया जा सकता। अब जो ये अर्थक्वेक आया है मराकेश में, ये इसका एपिसेंटर जो है वो हाई एटलस माउंटेन रेंज है। क्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो 6.8 था और इसको स्ट्रॉन्ग इसलिए भी क्लासिफाई किया जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही शैलो अर्थक्वेक था। मतलब यूएसजीएस के डेटा के हिसाब से लगभग 18.5 किलोमीटर बिलो अर्थ सरफेस ये अर्थक्वेक बना। और जो है इसलिए इसको हम कह रहे हैं कि बहुत ही शैलो क्वेक था जिसकी वजह से डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई है। अर्थक्वेक इस साइज़ के जो है इस रीजन में बहुत ही अनकॉमन है। फिर भी ये कहा जाता है कि लार्ज डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक्स यहाँ पर रिकॉर्ड पहले किए जा चुके हैं, खासकर मोरक्को और वेस्टर्न मेडिटेरेनियन रीजन में, क्योंकि यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट की जो नॉर्थवर्ड बाउंड्री है वो यूरेशियन प्लेट के साथ जो है वो मिलती है। ठीक है, अब अगर हम कहें तो इसमें जो ये अर्थक्वेक आया है ये ओब्लीक रिवर्स फॉल्टिंग का जो है उसको हम एट्रीब्यूट कर रहे हैं इस अर्थक्वेक को, रीज़न इसका। तो ये ओब्लीक रिवर्स फॉल्टिंग क्या होती है उसके लिए पहले हमें फॉल्ट समझना पड़ेगा। फॉल्ट क्या होता है? फॉल्ट एक फ्रैक्चर या जोन ऑफ फ्रैक्चर्स होता है बिटवीन टू ब्लॉक्स ऑफ रॉक। अब ये फॉल्ट्स जो है ये ब्लॉक्स को एक दूसरे के आसपास से जो है मूव करने को अलाउ करते हैं। अब जब क्वेक आता है तो रॉक ऑन वन साइड ऑफ द फॉल्ट जो है जनरली एकदम से दूसरे साइड ऑफ द फॉल्ट को जो है वो दूसरे साइड ऑफ द रॉक को जो है वो स्लिप पास करता है, तो उसकी वजह से जो है एनर्जी जनरेट होती है। ठीक है, या फिर ये एनर्जी रिलीज होती है। अब कई तरह के होते हैं फॉल्ट्स, जैसे सरफेस फॉल्ट जो है जिसको हम डिप फॉल्ट कहेंगे, वो बेसिकली जो है आपके फॉल्ट्स डायरेक्शन ऑफ द डिप प्लेन के अलोंग मूव करते हैं, इनको हम डिप स्लिप फॉल्ट्स कहते हैं। जबकि जो फॉल्ट्स हॉरिजॉन्टली मूव करते हैं उनको हम स्ट्राइक स्लिप फॉल्ट्स कहते हैं। अब जो ओब्लीक स्लिप फॉल्ट्स हैं ये दोनों ही डिप स्लिप और स्ट्राइक स्लिप दोनों के ही कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाते हैं। अब इसमें जो एक होता है रिवर्स, रिवर्स में क्या होता है कि अपर ब्लॉक जो फॉल्ट प्लेन के ऊपर का ब्लॉक है वो नीचे के ब्लॉक को जो है मूव उसके ऊपर से निकलता है, उसको हम जो है रिवर्स फॉल्ट कहते हैं। अब ऑब्लीक रिवर्स फॉल्टिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स हैं दोनों साइड के वो वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली जो है कंप्रेशनल फोर्सेस के अकॉर्डिंग जो है वो मूव करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये खासकर जो एरिया ऑफ कंप्रेशन है ये फॉल्टिंग कॉमन उसी जगह पर होती है। ठीक है, जब एक टेक्टोनिक प्लेट जो है दूसरी टेक्टोनिक प्लेट पे कन्वर्ज हो जाती है। ओके, सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अफ्रीकन यूनियन इन G20। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी 18 G20 समिट जो इंडिया में हुई है इसमें अफ्रीकन यूनियन को एज अ न्यू मेंबर ऑफ G20 जो है ऐड कर लिया गया है। अब आइडिया जो है ये जून में दिया गया था पीएम मोदी द्वारा कि G20 को में जो है अफ्रीकन यूनियन को भी फुल मेंबरशिप मिलनी चाहिए। अब ये आइडिया जर्मिनेट हुआ वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जो जनवरी 2023 में हुई थी, जिसमें मोस्ट ऑफ अफ्रीकन यूनियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। अभी तक सिर्फ साउथ अफ्रीका ही G20 का पार्ट था अफ्रीका में से, लेकिन अब G20 अफ्रीकन यूनियन भी जो है वो एज ए कलेक्टिव रिप्रेजेंट होगी। अगर हम देखें तो अफ्रीकन यूनियन एक इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 55 मेंबर स्टेट्स हैं इसमें। ये एक तरह से कॉन्टिनेंटल यूनियन है। इसको ऑफिशियली 2002 में लॉन्च किया गया था एज अ सक्सेसर टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। इसका हेडक्वार्टर जो है अडिस अबाबा इथोपिया में लोकेटेड है। अब इसके अगर हम ओरिजिन्स देखें तो ये पैन अफ्रीका विजन देता है, एक यूनाइटेड और फ्री अफ्रीका का, फ्रीडम जस्टिस इक्वालिटी डिग्निटी ऑफ अफ्रीकन पीपल के ऊपर। तो इसका बेसिक मोटिव ये है कि अफ्रीकन स्टेट्स को कोलोनाइजेशन से जो है वो मुक्त करना और यूनिटी और सॉलिडेरिटी बनाना। अफ्रीकन यूनियन को ऑफिशियली 2002 में लॉन्च किया गया था।
ठीक है। डरबन साउथ अफ्रीका में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने रिसेंटली 19th हेड्स ऑफ एशियन कोस्ट गार्ड एजेंसीज मीटिंग इस्तांबुल में पार्टिसिपेट किया है। बेसिकली एक एनुअल इवेंट होती है जिसमें मेंबर नेशंस रोटेशनल बेसिस पर जो है वो इसको होस्ट करते हैं। इनिशिएट इसको जापान ने किया था कोऑपरेशन करने के लिए रीजनल कोस्ट गार्ड्स में। 23 मेंबर्स हैं इसके अभी टोटल, और 2 एसोसिएट मेंबर्स भी हैं। ठीक है। इसको लॉन्च कब किया गया था? जब इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक पायरेटेड वेसल को नवंबर 1999 में कैप्चर किया था, तब जो है ये फील किया गया कि एशियन जो है कोस्ट गार्ड जो है उनको आपस में कोऑपरेट करना चाहिए। ठीक है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड जो है वो सर्च एंड रेस्क्यू वर्किंग ग्रुप को चेयर करता है, और कई अलग वर्किंग ग्रुप्स जो हैं इसमें उनके मेंबर भी है इंडिया। ठीक है। जो 18th एडिशन है 2022 का, वो इंडिया ने ही उसको होस्ट किया था, इंडियन कोस्ट गार्ड ही उसका होस्ट था। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं, इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है उसको इंट्रोड्यूस करने लगा है इंटरबैंक बोरोइंग या कॉल मनी मार्केट के लिए भी। तो मनी मार्केट क्या होती है? एक सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल मार्केट जहां पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिनकी हाई लिक्विडिटी होती है, शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़ होती है, उनको ट्रेड किया जाता है। तो ये बाइंग और सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज़ जो शॉर्ट टर्म मैच्योरिटीज़ की 1 ईयर या लेस की होती है उनको उसको हम मनी मार्केट कहते हैं। तो इसको सिर्फ बैंक्स ही नहीं, इवन कंपनीज भी फंड्स रेज करने के लिए यूज़ करती हैं कॉल मनी को। अब ये एक तरह से मनी मार्केट एक सेफ प्लेस कही जाती है इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज़ होती है उनकी लिक्विडिटी बहुत हाई होती है। तो अगर हम देखें कॉल मनी का मतलब क्या होता है, कॉल मनी एक शॉर्ट टर्म लोन है जो कि इमीडिएटली पे करना होता है, या फुल में या फिर जिस तरह से लेंडर डिमांड कर रहा है। लेंडर जो है वो कोई प्रायर नोटिस नहीं देना पड़ता उनको बोरोवर को रीपेमेंट के लिए, और कॉल मनी जो लोन है वो कोई डिफाइंड शेड्यूल ऑफ पेमेंट या मैच्योरिटी को फॉलो नहीं करता है। ठीक है। अगर हम देखें इंटरबैंक कॉल मनी मार्केट, तो ये शॉर्ट टर्म मनी मार्केट है जिसमें कि लार्ज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोरो या लैंड करते हैं मनी एट इंटरबैंक रेट्स। इसमें जो लोन्स होते हैं बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के होते हैं, जनरली 1 वीक से भी कम ड्यूरेशन के होते हैं, और ये लोन जनरली बैंक्स को हेल्प करते हैं उनकी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए। पर ये एक्सक्लूसिव सिर्फ बैंक्स के लिए नहीं, एक्सक्लूसिव नहीं होती है। कस्टमर्स जो हैं इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, म्यूचुअल फंड्स, लार्ज कॉरपोरेशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, वो भी इसमें मेंबर्स हो सकती हैं जो कि कॉल मनी जो है वो उससे फंड्स रेज करें। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं FAO फूड प्राइस इंडेक्स। ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज और इंटरनेशनल रिलेशंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो प्राइस इंडेक्स है वो 2 ईयर लो पर पहुंच गया अगस्त में। तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का जो फूड प्राइस इंडेक्स है ये एक मेजर है मंथली चेंज इन इंटरनेशनल प्राइजेस ऑफ अ बास्केट ऑफ फूड कमोडिटीज़ का। जनरली 5 कमोडिटीज़ इसमें जो है इंक्लूड की जाती हैं उसके एवरेज प्राइस, सीरियल, वेजिटेबल, डेयरी, मीट, शुगर। बेस ईयर 2014 और 16 है। अब अगर हम देखें FAO तो एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, और इसका गोल है फूड सिक्योरिटी फॉर ऑल अचीव करना। हेडक्वार्टर इसका रोम में है, इटली में। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है इसकी सिस्टर बॉडीज़ हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम। ये टॉपिक आपके इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इथोपिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है कि उन्होंने अपनी साइड से ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट कर लिया है, ऑलमोस्ट फिल कर लिया रादर, नाइल रिवर पर। तो ये ग्रैंड इथोपियन रेनेसां डैम जो है इसको हम मिलेनियम डैम कहते थे पहले। ये सूडान और इथोपिया के बॉर्डर पर लोकेटेड है, ब्लू नाइल पर बनाया गया है इसको। ये 6.45 गीगावाट्स की कैपेसिटी का डैम है। लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहा जा रहा है इसको अफ्रीका का जब ये कंप्लीट होगा। 145 मीटर हाई है, 1780 मीटर लॉन्ग है। और इजिप्ट और सूडान जो है ये के साथ इसकी वजह से कन्फ्लिक्ट हो गया इथोपिया का, क्योंकि वो ये सोच रहे हैं कि ये $4.2 बिलियन का जो डैम है ये नाइल वाटर का जो शेयर उनके पास आता है उसको रिड्यूस कर देगा। इसीलिए एक तरह से इथोपिया के साथ उनका कन्फ्लिक्ट हो रहा है इस वजह से। तो इथोपिया ने इसकी कंस्ट्रक्शन 2011 में शुरू की थी ब्लू नाइल ट्रिब्यूटरी के ऊपर। इजिप्ट ने ऑब्जेक्ट किया था कि जो है ये इस डैम की वजह से जो है वो ब्लू जो नाइल रिवर की जो फ्लो है वो उनकी तरफ रिड्यूस हो जाएगा। और ये डिस्प्यूट जो है कहा जा रहा है कि एक फुल फ्लैश कॉन्फ्लिक्ट ना ले ले, इसका डर भी जो है कई कंट्रीज़ में बना हुआ है, इसलिए US भी बीच में मीडिएट कर रहा है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो फानीगिरी आर्टिफैक्ट्स जो हैं जो 1942 में डिस्कवर किए गए थे, 200 बीसी और 400 सीई के बीच के पीरियड के जो ये आर्टिफैक्ट्स हैं, इनको भी रिसेंटली न्यूयॉर्क मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट में डिस्प्ले किया गया है। तो ये फानीगिरी बुद्धिस्ट साइट है। ये सतवाहना डायनेस्टी के आसपास का जो टाइम पीरियड था उसको बिलोंग करती है। फानीगिरी का मतलब होता है फानीगिरी बेसिकली एक स्मॉल विलेज है स्टेट ऑफ तेलंगाना में, और जो यहाँ पर महायान और हिनयान दोनों स्कूल ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले में है। यहाँ पर जो एविडेंस दिख रहे हैं उससे हमें पता लगता है कि बुद्धा को एक डिफिकेशन शुरू कर दी गई थी, मतलब एज अ डीटी माना जाने लगा था। ठीक है। सो उनके ही उसके उसी जो है एक प्रैक्टिस के आसपास जो है वो रिचुअल प्रैक्टिस भी शुरू हो गई। और क्योंकि जब आप किसी को भी डीटी बना देते तो फिर आपके रिचुअल्स भी उसमें आ जाते हैं, है ना। तो एक तरह से बुद्धा को जो है एक डीटी वर्शिप शुरू हो गया था, इसमें ये एविडेंस हमें मिलता है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is earthquake in Morocco. This topic is important for your geography and environment sections both. So a powerful earthquake has struck Morocco on September 8 night, which has killed hundreds of people and damaged the buildings, including in the historic city of Marrakesh. So far, more than 2,000 people have died, mostly in Marrakesh and 5 provinces near the quake's epicenter. So basically, what's an earthquake? Earthquake is an intense shaking of the ground caused by movement under the Earth's surface, and it happens when two blocks, tectonic plates of the Earth, suddenly slip past one another. These spread through the Earth, and they cause the shaking of the ground. So there are several ways to measure these earthquakes. First, of course, is the moment magnitude scale based on the total moment released of the earthquake, and there is Richter scale in which the energy or magnitude of earthquakes between 0 to 10 are measured. Then there is intensity scale or Mercalli scale where visible damage is measured. So earthquakes cannot be predicted beforehand, and there can be no early warning systems in this case. Okay, so if we look at the recent Marrakech earthquake, then the epicenter where this earthquake was located was in high Atlas mountain range. So basically epicenter is the area directly above the hypocenter. Hypocenter is the place where where the location of the earthquake is there, and hypocenter is directly above the surface of that epicenter is directly above the surface of that hypocenter, and where the destruction is the maximum. Okay. So this epicenter of this earthquake was in high Atlas mountain range, and it is about 72 kilometers from Marrakech. So the quake had a magnitude of 6.8, meaning it had been classified as strong. So it is a relatively shallow. This earthquake also struck at a relatively shallow depth, which made it more destructive. So such quakes are generally more dangerous because they carry more energy to the surface. So earthquakes of this size are uncommon in this region, but still USGS data says that large destructive earthquakes have been recorded and reported from Morocco in western Mediterranean region. So such quakes have occurred due to the northward convergence of African plate with respect to the Eurasian plate along a complex plate boundary. Okay, so this time the Morocco quake can be attributed to the oblique reverse faulting. So to understand that, we have to first know that fault is a fracture or zone of fractures between two blocks of rock. So faults basically allow blocks to move relative to each other, and rocks on each side of the fault suddenly slip apart. When they suddenly slip past one another, then this earthquake happens. So there are different types of fault. For example, dip slip faults. When the faults move along the direction of the dip plane or the surface, then they are called dip slip faults. When faults move horizontally, then they are called strike slip faults. This oblique slip faults are basically the combination of both these dip slip and strike slip faults. And the term reverse here refers to a situation when the upper block above the fault plane moves up and over the lower block, then this reverse happens. So oblique reverse basically means that rocks on one side of the fault plane move vertically and horizontally in response to compressional forces. So this type of faulting is very common in areas of compression where one tectonic plate is converging into another. Okay, like in this case Eurasian and North African plate. So the next topic is African Union G20. This topic is important for your international relations. So during the 18th G20 summit held in India, African Union has been admitted as a new member of G20. So the idea of
making African Union as a member in G20 was floated in June this year when PM Modi proposed to G20 leaders that African Union should be given full membership. And this idea actually generated after the Voice of Global Summit, Voice of the Global South Summit in January 2023, in which most of the African Union countries participated. So far, only South Africa was part of G20 from Africa, but now after African Union's participation, this would be a broad-based participation in G20. So African Union is an intergovernmental organization. It consists of 55 member states and it's a continental union. It was officially launched in 2002 as a successor to the Organization of African Unity, and its headquarters are located in Addis Ababa, that is in Ethiopia. So if we look at the origins of African Union, then its predecessor Organization of African Unity, was established on 25th May 1963, and the initiative was taken as a Pan-Africa vision for a united and free Africa, based upon the principles of freedom, justice, equality, dignity of African people. And the aim of OAU was to eradicate the African states from colonization and to promote unity and solidarity. So it culminated into the currently formed African Union through the Sirte Declaration, and that's why this African Union was created or officially launched in July 2002 in Durban, South Africa. So the next topic is HACGAM, or Heads of Asian Coast Guard Agencies meeting. So this topic is important for your security section. So Indian Coast Guard has recently took part in this 19th Heads of Asian Coast Guard Agencies meeting in Istanbul. So it's an annual event which is hosted by one of its member nations on a rotational basis, and it was initiated by Japan to promote cooperation among regional coast guards. This forum has 23 member coast guard agencies and 2 associate members. So it was launched after the capture of pirated vessel MV Alundra Rainbow by the Indian Coast Guard agencies in 1999. So the aim, of course, at that time it was realized that it is important to foster cooperation between the member states of Asian states. So that's why this HACGAM was launched. So Indian Coast Guard chairs the Search and Rescue Working Group in this HACGAM, and it is also a proactive member of other working groups which include environmental protection, controlling unlawful acts at sea, information sharing. So in 2002, 18th edition of this meeting was hosted by Indian Coast Guard in New Delhi. So the next topic is interbank call money market. This topic is important for your economy section. So RBI is likely to launch the pilot of central bank digital currency for transactions for interbank borrowing or call money market. So what is money market? It is basically a section of financial market where financial instruments with high liquidity and short-term maturities are traded. So it includes buying and selling of securities of short-term maturities of 1 year or less, and it is used by many participants including companies to raise funds. So this type of money market is considered as a safe place to invest due to the high liquidity of securities. So what is call money? Call money is a short-term loan which is due to be paid immediately in full as and when demanded by the lender. Unlike term loans, call money does not have any defined schedule of payment and maturity, and the lender of the call money need not provide any notice to the borrower about the prepayment. So what is then interbank call money market? So it's a short-term money market which allows large financial institutions to borrow and lend money at interbank rates. So loans in this call money market are very short, usually less than even a week. Okay, so banks generally use this interbank call money market to meet their reserve requirements, and of course, it is not just exclusively used by banks, but even other customers like financial institutions, mutual funds, large corporations, and insurance companies also use this. So the next topic is FAO Food Price Index. This topic is important for your social issues and as well as your international relations. So Food and Agriculture Organization's Food Price Index has recently fell to a new 2-year low in August. So FAO's Food Price Index is a measure of the monthly change in international prices of a basket of food commodities. So it consists of average of 5 commodity group price indices: cereal, vegetable, dairy, meat, and sugar. And the base year for it is 2014 and 16. So FAO is a specialized agency of United Nations, and its goal is to achieve food security for all, and it is headquartered in Rome, that is in Italy. So World Food Program and the International Fund for Agriculture Development are its sister bodies. Okay, so there are certain reports which are published by FAO which have been mentioned here. So the next topic is Grand Ethiopian Renaissance Dam.
This topic is important for your international relations. So Ethiopia has recently announced that it has filled its Grand Ethiopian Renaissance Dam on the Nile River. So this dam is formerly known as the Millennium Dam, near the border with Sudan. So it is located on the Blue Nile. So at about 6.545 gigawatts, this dam will be the largest hydroelectric power plant in Africa when completed. So this main dam is 145-meter high and 1780-meter long. So Egypt and Sudan fear that this massive dam will severely reduce their share of Nile water that they receive, and they have repeatedly asked Ethiopia to stop filling it until they have all reached an agreement on how it should work. Though, so Ethiopia began construction of this dam in 2011 on the Blue Nile tributary. Egypt has time and again objected to the construction of this dam. Okay, so there is a fear among the world community that this dispute may evolve into a full-fledged conflict between the two nations. So that's why even the US has stepped in to mediate. So the next topic is Fanigiri artifacts. This topic is important for your art and culture section. So Fanigiri artifacts, which date between 200 BC and 400 CE, which were discovered in 1948 1942, are on display at the New York Metropolitan Museum of Art. So this basically belongs to the Satavahana Empire period, and this Fanigadi Buddhist site is considered one of the most important findings in Buddhist iconography in this millennium. So Fanigiri, meaning hillock of snakehood, is a small village in the state of Telangana, and the Thuranas which have been discovered in Fanigiri are very important, and they show that they show both the attributes of Mahayana and Hinayan schools of thought. So there is evidence that Fanigiri there is evidence from Fanigiri that shows deification of Buddha, which means that deity worship of Buddha started during this period, and because of that, ritual practice also followed. Okay, whenever you start deification of any person or any deity, then of course ritual practice also gets involved in that particular community or religion. Okay, so that's what we get to observe from the Thoranas found in these Fanigadi site. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.